Assalamu alaikum. Advocate Ameer Hamza here with you. This is lecture 2 at sale tax. Today we will discuss person to be registered for sale tax. कौन से लोग हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना जिनका ज़रूरी है। इसमें नंबर 1 है ऑल इम्पोर्टर, ऑल होल सेलर इंक्लूडेड डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर नॉट फॉलिंग इन कॉटेज इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरर वो लोग होते हैं जो कोई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनाने वाला जो है वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। उसमें हम बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स ए मैन्युफैक्चरर हुज एनुअल टर्नओवर फ्रॉम टैक्सेबल सप्लाईज मेड इन एनी टैक्स पीरियड ड्यूरिंग द लास्ट 12 months ending any tax period does not exceed 10 million rupees or whose annual utility, electricity, gas and telephone bill during the last 12 months ending any tax period do not exceed 800,000 rupees. रिटेलर टायर वन। अब रिटेलर की टू कैटेगरी है, एक टायर वन होता है, एक टायर टू। अभी हम डिस्कस करेंगे टायर वन। रिटेलर मीन्स ए रिटेलर operating as a unit of a national or international chain of stores. A retailer operating in an air conditioner, shopping mall, plaza, or center excluding kiosks. A retailer whose cumulative electricity bill during the immediately preceding 12 consecutive months exceeding rupees 600,000 and a wholesaler cum retailer engaged in bulk import and supply of consumer goods on wholesale basis to the retailer as well as on retail basis to the general body of the consumers. A person required under any provincial or federal law to be registered for purpose of any duty or tax collected or paid as if it were a levy of sale tax. uh, Services provider like hotel, club, caterers, custom agent, ship chandlers, stewards, courier service, etc. person making zero rate supplies, including commercial exporter who intended to obtain sale tax refund against his zero rate supplies. A person who is required to be registered by virtue of a set criteria but still avoid registration can be compulsory registered by the department after proper inquiry under sub rule 1 of rule 6 of sale tax rule 26. अब हम इसको उर्दू में डिस्कस करेंगे, जिसकी उर्दू में मैंने ट्रांसलेशन करी है। सील टैक्स के लिए रजिस्टर होने वाले तमाम दरआमद कुनिंदागान, तमाम थोक फरोश, वाशमूल डीलर और तकसीम कार, सनतकार काटेज इंडस्ट्री में नहीं गिर रहे हैं। काटेज इंडस्ट्री से मुराद वो सनतकार है जिसकी टैक्स की मुद्दत को ख़त्म होने वाले पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी टैक्स की मुद्दत में किए जाने वाले काबिल टैक्स सप्लाई से सालाना टर्नओवर 10 मिलियन रुपए से ज़्यादा ना हो। सालाना टर्नओवर जिसका 10 मिलियन से ज़्यादा ना हो वो कॉटेज इंडस्ट्री में फ़ाइल कर रहा है, जिसके साथ यूटिलिटी, बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल गुज़श्ता 12 महीनों में टैक्स की मुद्दत ख़त्म होने वाले महीने 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होते। खुर्दा फरोश का मतलब है टायर वन। खुर्दा फरोश है एक खुर्दा फरोश जो स्टोर के कौमी या बैनुल अक़वामी सिलसिले की इकाई के तौर पर काम करता है। एक खुर्दा फरोश जो एयर कंडीशनर, शॉपिंग मॉल, प्लाजा या मरकज़ में काम करता है, खोखे को छोड़कर। एक खुर्दा फरोश जिसका बिजली का मजमूई बिल मुसलसल पिछले 12 महीनों के दरमियान 6 लाख रुपए से ज़्यादा है। और एक थोक फरोश और खुर्दा फरोश। थोक फरोश की बुनियाद पर खुर्दा फरोश के साथ साथ सार्फिन की अमूमी बॉडी को खुर्दा बुनियादों पर अशियाए ज़रूरिया की बल्क दरआमद और फराहमी में मसरूफ़ एक शख्स को किसी भी सूबाई या वफाकी कानून के तहत किसी भी ड्यूटी या टैक्स जमा कराने या अदा करने के मकसद के लिए रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है।
वह ये सेल टैक्स की वसूली है जिसे सर्विस फराहम करने वाले जैसे होटल, क्लब, कैटर्स, कस्टम एजेंट्स, शिप चैंडलर्स, स्टीवडोर्स, कोरियर सर्विस वगैरह सिफर रेट सप्लाई बनाने वाले अफराद बशमूल कमर्शियल एक्सपोर्टर जो अपनी सिफर रेट सप्लाई के खिलाफ सेल टैक्स रिफंड हासिल करने का इरादा रखता है। एक शख्स जो मज़कूरा वाला मेयार के मुताबिक रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन से गुरेज करता है। सेल टैक्स रूल्स 2006 के रूल 6 के कायदा 1 के तहत मुनासिब इंक्वायरी के बाद महकमे की तरफ से लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब हम सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन बेसिक को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट स्टेप बिफोर फाइलिंग योर सेल टैक्स रिटर्न is to get yourself registered with the Federal Board of Revenue (FBR). The registration with FBR provided you with sale tax registration number (STRN) or user ID and password. These credentials also allow access to e-file portal, the online portal for filing sale tax return. Online sale tax return can only be filed while logging into the e-file portal. The automated system for sale tax registration will be effective from July 2019, allowing for registration of the person for sale tax through the IRIS portal. Only those persons having active IRIS portal credentials can register for sale tax. अब हम इसको उर्दू में डिस्कस करते हैं। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की बुनियादी बातें। अपना सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले पहला कदम यह है कि अपने आप को फेडरल बोर्ड रेवेन्यू में रजिस्टर्ड करवाएं। एफपीआर के साथ रजिस्ट्रेशन आपको सेल्स या आईडी, एसटीआरएन, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ई फाइल और पासवर्ड फराहम करती है। ये असनाद पोर्टल तक रसाई की इजाज़त देती है। सेल टैक्स रिटर्न करने के लिए ऑनलाइन सेल टैक्स रिटर्न सिर्फ फाइल पोर्टल में लॉग इन करते वक्त किया जा सकता है। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ने खुद का निज़ाम 1 जुलाई 2019 से नाफिज अमल होगा जिससे सेल टैक्स के लिए आईआरएस पोर्टल के ज़रिए फ़र्द की रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाएगी। पोर्टल की असनाद आईआरएस सिर्फ वही लोग जो फाल रखते हैं सेल टैक्स के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। द पर्सन शैल यूज देयर IRIS portal credentials to log into IRIS portal. Once logged in, the portal shall select form 14(1) from registration filed voluntarily through simplified sale tax from the registration drop down menu. One selection of Form 14(1) from form of registration filed voluntarily through simplified sale tax. The person will be asked to furnish the following information: tax period, sale tax information in case of individual, the type of registration where it is manufacturer or non-manufacturer, UOP or company, CNIC of the member, director, principal office along with the type of registration, whether it is manufacturer or non-manufacturer, bank account detail that include the bank account certificate issued by the bank in the name of the business detail including business name, acquisition data, capacity, and business activity, along with particular of all branches in case of multiple branch at various location. GPS tagged photograph of the business premises registered registration consumer number with the gas and electricity supply along with picture of utility meter. In case of manufacturer, also the GPS
tagged photograph of machinery and industrial electricity or gas meter installed. On submitting the above information and document, the system shall register the person of our sale tax. Detailed sale tax registration procedure is provided in the link below. रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार पोर्टल में लॉग इन होने के लिए IRS वो शख्स पोर्टल की इसनाद का इस्तेमाल करेगा। एक बार लॉग इन होने के बाद फ़र्द रजिस्ट्रेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू में फॉर्म 14(1) रज़ाकाराना तौर पर आसान के ज़रिए दायर करदा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सेल टैक्स का इंतखाब करेगा। फॉर्म 14(1) आसान शुदा के ज़रिए रज़ाकाराना तौर पर दायर करदा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सेल टैक्स के इंतखाब पर शख्स से दर्ज ज़ैल मालूमात फराहम करने को कहा जाएगा। टैक्स की मुद्दत सेल टैक्स की मालूमात इस सूरत में इनफरादी रजिस्ट्रेशन की किस्म चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या गैर मैन्युफैक्चरर हो, AOP या कंपनी मेंबर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर का CNIC और रजिस्ट्रेशन की किस्म चाहिए। वो मैन्युफैक्चरर हो या नॉन मैन्युफैक्चरर, बैंक अकाउंट की तफसीलात जिसमें बैंक की जानब से कारोबार के नाम पर जारी करदा बैंक अकाउंट का सर्टिफिकेट शामिल है। कारोबारी तफसीलात बशमूल कारोबारी नाम, असूल की तारीख, सलाहियत और कारोबारी सरगर्मी के साथ साथ तमाम शाखों की तफसीलात मुख्तलिफ मकाम पर मुतअद्दिद शाखों की सूरत में टैक्स शुदा तस्वीर, GPS, कारोबारी अहाते की गैस और बिजली फराहम करने वाले के साथ रजिस्ट्रेशन, सार्फ नंबर के साथ यूटिलिटी लिमिटेड की तस्वीर, मैन्युफैक्चरर के मामले में मशीनरी और टैक्स शुदा GPS, सनती बिजली या गैस मीटर की तस्वीर की मंदरजा बाला मालूमात और दस्तावेज़ात जमा कराने पर निज़ाम सेल टैक्स के लिए शख्स को रजिस्टर करने का सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का तफसीली तरीक़ाकार नीचे दिए गए लिंक में दिया गया है। इन ऑर्डर टू फाइल their sale tax return, the person registered using the simplified sale tax registration application would be required to visit an e-Sahulat center of Nadra within 1 month from the date of registration for biometric verification. Upon successfully verification within the time period, taxpayers shall be allowed to file their sale tax return. In case the person is unable to perform biometric verification, then they shall be removed from the sale tax active taxpayer list. Physical verification in case of manufacturer, the existing physical verification process of their business premises, utility meter, preference number, and all title deeds etc. would the place after registration. In both cases, manufacturer or other than manufacturer category, an authorized tax officer would be allowed to initiate a request for the taxpayer to provide any missing document or assist in the verification of any document information provided in the simplified sale tax registration application within 15 days. In case the taxpayer fail to comply, they would be take off the sale tax active taxpayer list. Special instructions for error correction. In case the user is usable to view menu option in the main menu or face session expiry due to timeout or internet disconnection, the user need to confirm internet availability and then re-log in IRS application with valid credentials. अपने सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सादा सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त का इस्तेमाल करते हुए रजिस्टर्ड अफराद को बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख से 1 माह के अंदर अंदर
ای سہولت سینٹر کا دورہ کرنا ہوگا۔ مقررہ مدت کے اندر کامیاب تصدیق کے بعد ٹیکس دہندگان اپنے سیل ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر وہ شخص بائیو میٹرک تصدیق کرنے سے قاصر ہے تو اسے سیل ٹیکس ایکٹیو ٹیکس دہندگان کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ جسمانی تصدیق مینوفیکچرر کے معاملے میں رجسٹریشن کے بعد موجودہ جسمانی تصدیق عمل ان کے کاروباری احاطے، یوٹیلیٹی میٹر، ریفرنس نمبر اور یا ٹائٹل ڈیڈ وغیرہ ہوگا۔ دونوں صورتوں میں یا مینوفیکچرر کیٹیگریز کے علاوہ ایک مجاز ٹیکس آفیسر کو ٹیکس دہندگان کے لیے کوئی بھی گمشدہ دستاویز فراہم کرنے کی درخواست شروع کرنے یا سیل ٹیکس رجسٹریشن کی آسان درخواست میں فراہم کردہ کسی بھی دستاویز معلومات کی تصدیق میں مدد کرنے کی اجازت ہوگی۔ 15 دن ٹیکس دہندگان تعمیل کرنے میں ناکام ہونے کی صورت میں انہیں سیل ٹیکس ایکٹیو ٹیکس دہندگان کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ خرابی کی اصلاح کے لیے خصوصی ہدایات اگر صارف مین مینیو کے اختیارات کو دیکھنے سے قاصر ہے یا ٹائم آؤٹ یا انٹرنیٹ منقطع ہونے کی وجہ سے سیشن کی میعاد ختم ہونے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صارف کو انٹرنیٹ کی دستیابی کی تصدیق کرنی ہوگی اور پھر درست اپلیکیشن دوبارہ لاگ ان IRS اسناد کے ساتھ کرنا ہوگا۔ Change in particular of registration. In case there is a change in the name, address or other particular as stated in the registration certificate, the registered person shall notify the change in the prescribed form to the RTO within 14 days of such change. The change in the business category shall be allowed after RTO has verified the manufacturer facility and confirmed the status as industrial consumer of the electricity and gas distribution companies. رجسٹریشن کی تفصیلات میں تبدیلی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں بیان کردہ نام، ایڈریس یا دیگر تفصیلات میں تبدیلی کی صورت میں رجسٹرڈ شخص اس تبدیلی کے 14 دنوں کے مقررہ فارم میں تبدیلی کے لیے اصلاح RTO اندر دے گا۔ RTO کاروباری زمرہ میں تبدیلی کی اجازت طرف سے مینوفیکچرر سہولت کی تصدیق اور بجلی اور گیس کی تقسیم کار کمپنیوں کے صنعتی صارفین کی حیثیت کی تصدیق کے بعد دی جائے گی۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسفر آف رجسٹریشن۔ In case a registered person intended to shift his business activity from the jurisdiction of one RTO to another RTO, or as the case may be to an RTO or LTO, or he has any other valid reason for such transfer, he shall apply to the RTO for transfer of his registration. The RTO may, subject to such conditions, limitation or registration as it may deem fit to impose by an order, transfer the registration of a registered person from the jurisdiction of one RTO/LTO to another RTO/LTO, or as the case may be to the LTO or RTO. The return for the tax period in which the registration is transferred shall be filed in the RTO/LTO from where the registration is transferred. رجسٹریشن کی منتقلی اگر کوئی رجسٹرڈ شخص اپنی کاروباری دائرۂ اختیار RTO/LTO سرگرمی کو ایک میں منتقل کرنے کا RTO/LTO سے دوسرے RTO/LTO میں ارادہ رکھتا ہے، یا جیسا کہ معاملے میں ہو سکتا ہے، یا اس کے پاس اس طرح کی منتقلی کی کوئی اور معقول وجہ ہے، تو وہ اپنے رجسٹریشن کی منتقلی کے لیے RTO کو درخواست دے گا۔ RTO ایسی شرائط، حدود یا پابندیوں کے ساتھ مشروط ہو سکتا ہے جو کہ کسی حکم کے ذریعے کسی رجسٹرڈ شخص کی رجسٹریشن کے دائرۂ اختیار سے دوسرے RTO/LTO
ایک کو یا جیسا کہ معاملہ ہو عائد کرنا آر ٹی او ایل ٹی او کی طرف سے ہو مناسب سمجھے۔ ٹیکس کی مدت کے لیے ریٹرن جس میں آر ٹی او کے رجسٹریشن کو منتقل کیا گیا ہے داخل کیا جائے گا جہاں سے رجسٹریشن منتقل کی گئی ہے۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے ریوائزڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ In case of multiple registration, the registered person shall apply the RTO/LTO for single registration to the RTO/LTO, which after obtaining tax legality from the concerned RTO/LTO shall issue revised registration certificate in which previous registration number shall be merged. نظر ثانی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایک سے زیادہ رجسٹریشن کی صورت میں سنگل آر ٹی او ایل ٹی او رجسٹرڈ شخص کو درخواست آر ٹی او ایل ٹی او رجسٹریشن کے لیے ٹیکس واجبات دے گا جو متعلقہ کا پتہ لگانے کے بعد نظر ثانی شدہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرے گا جس میں پچھلا رجسٹریشن نمبر ملا دیا جائے گا۔ ڈی رجسٹریشن To deregistration, a person shall submit an application to Commissioner Inland Revenue having appropriate jurisdiction within 90 days from the date of such application or the date all the due outstanding against such a person are deposited by the person whichever is later shall cause the person to be registered through the computerized system. Following person can be deregistered or cases to carry on the business or whose supply become exempt from sale tax or whose turnover become less than the threshold level can apply for cancellation of the registration. رجسٹریشن ختم کرنے کے لیے کوئی شخص مناسب دائرہ اختیار رکھنے والے کمشنر ان لینڈ ریونیو کو درخواست جمع کرائے گا۔ ایسی درخواست کی تاریخ یا تاریخ سے 90 دن کے اندر اس شخص کے خلاف تمام واجبات جمع کرائے جائیں گے جو بھی بعد میں کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے شخص کو رجسٹریشن ختم کر دی جائے گی۔ درج ذیل افراد کا اندراج ختم کیا جا سکتا ہے جو کاروبار کو جاری رکھنا چھوڑ دیتا ہے یا جس کی سپلائی سیل ٹیکس سے مستثنیٰ ہو جائے یا جن کا ٹرن اوور حد سے کم ہو اور رجسٹریشن کی منسوخی کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ Now it's end lecture 2. Dear viewer, please watch to the whole lecture and comments me for that lecture and please share and subscribe to that lecture. Thank you very much. Advocate Ameer Hamza here with you.